student to join. Well, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Perfect. It's gradually we are very close to the Holi. The weather is drastically changing. Although it's very dryness, winter is going, summer is approaching. This makes the people a little bit of lazy. तो हमको भी लगता है कि आप लोग कई लोगों को लेजी बना दिया हुआ है. Is it not true? Yes, sir. Anyway, आज हम लोग जो है यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट सेक्शन है प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन टूरिज्म इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टूरिज्म, इसको और जो न्यू ट्रस्ट एरिया, ये दोनों को एक साथ क्योंकि मिला के हम डिस्कशन करेंगे. और उसके बाद एज यूजुअल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम. जब हम इंडियन टूरिज्म की बात करते हैं, अगर आप हिस्ट्री से देख लीजिए, इंडिया ऑलवेज बीन एन अट्रैक्शन सेंटर फॉर द वेस्टर्नर्स ड्यू टू इट्स कल्चर, फूड, स्पाइसेस, एवरीथिंग. लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर द टूरिज्म इंडस्ट्री इज टुडे, it's you can say it started about 3 decades, almost 30-35 years ago. And in the last 30-35 years, there is a significant development of foreign tourist arrival in India. और इसका हमको लगता है आपका जो है वो आप लीड कर लीजिए क्योंकि वो स्पीकर से दो. So here for the last 30-35 years it has developing, and now we have lots of foreign tourists coming in India. और जैसे कि foreign tourist की numbers increase होता जा रहा है, obviously Indian foreign exchange भी बढ़ता जा रहा है because they bring a foreign currency in the country. अगर historical aspect में देखिए, Indian tourism जो develop हुआ, it was in 1966. That was the first time in India when a public sector, that is, we can say that is a milestone of Indian tourism. In public sector, ITDC was created in 1966. ITDC stands for Indian Tourism Development Corporation. ITDC जो है ये not only make the policies of promote the tourism, but they also develop the infrastructure for the tourism in this country. ITDC built the hotels, the chain of hotels in India that is called the Ashoka Hotel. आप लोग कई लोग सुने होंगे कि अशोका होटल जो कि ITDC द्वारा चलाया गया, and that was the first public sector hotels in India. Most of the major cities, वाराणसी में भी था, बिहार में भी है, साउथ में भी है, but unfortunately now few of the ITDC hotels are left because being a public sector they were not making profit, and eventually the government of India decided to sell those properties. Recently एक news आया कि Delhi ITDC hotel, the Ashoka hotel, it is on sale. और इन ITC होटलों को आप देखिएगा, इनकी लोकेशन दे ऑल आर इन ए प्राइम लोकेशन टूरिस्ट पर्सपेक्टिव में. तो ITC इज द माइलस्टोन ऑफ इंडियन टूरिज्म, एंड ITDC not only develop the hotels but they also develop the transportation called Ashoka Tours and Travels. तो ITDC के साथ जो है that was the time when the tourism developed. And they also have a tourism development corporation. These are the two public sectors, and obviously many private organizations, they were also involved to promote the tourism in this country. The private operators were the hoteliers. The chain of hotels like the Tata Group of Hotels, Taj, Oberoi, and many other hotels, they all came up. A very interesting thing is that during that period, the Air India,
which had been sold to the Tatas. It has gone back to the Tatas last year. It was a public government of Indian carrier. It's a public sector undertaking. Air India also opened the chain of hotels in India. और उनका जो होटल है, they all are near to the international airport. Anybody can tell me the name of the chain of hotel used to run by Air India? Anybody? Starbucks. Sorry? Starbucks. No, Starbucks. It's a coffee. Starbucks. Talking of Starbucks? Taj Hotel, sir. No, Taj Hotel belongs to the Tatas. That is called Century Hotel. आपके दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आप देखेंगे बॉम्बे एयरपोर्ट में दिस आर द कपल ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे एयर इंडिया ओपन द होटल्स कॉल्ड सेंचुरी होटल. तो this is how this public sector, it was first the public sector who initiated to develop the tourism. The private sector schemes like Taj, the Oberoi's and many other schemes. तो इनिशियली ये जो होटल्स होते थे ये बिग सिटीज में होते थे या आपके जो है एयरपोर्ट के पास होते थे. लेकिन जैसे हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ने लगा इंटरनेशनल, और ये जो बड़े बड़े होटल्स होते थे बड़े शहरों में होने के कारण दे वर बेसिकली फॉर द रिच पीपल. द कॉमन पीपल वर अनएबल टू गो एंड अफोर्ड टू स्टे इन सच काइंड ऑफ होटल्स. तो ग्रेजुअली जब दे रियलाइज कि हम बड़े शहरों में ना फोकस करके छोटे शहर को भी प्रमोट करें तो ऑब्वियसली टूरिस्ट विल गो. देन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द स्मॉल सिटीज एंड आफ्टर दिल्ली दे वेंट टू आगरा एंड जयपुर. आज अब देखिएगा ताज एंड ओबरॉयज, दे आर द होटल्स इन दिल्ली, दे आर द होटल्स इन आगरा, दे आर होटल्स इन जयपुर. और हमारे इंडिया में अगर टूरिज्म अगर डेवलप हुआ तो सबसे पहले ये गोल्डन ट्रायंगल में शुरू हुआ, दैट इज दिल्ली, आगरा एंड जयपुर. एंड ग्रेजुअली इट्स कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड नाउ दिस चेन्स ऑफ होटल्स दे आर नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर ऑपरेटिंग विद अदर कंट्रीज एज वेल. अभी बहुत सारे छोटे बजटेड होटल्स आए, लग्जरियस होटल्स भी आए. तो दैट इज हाउ द इंडियन tourism keep on developing from post-independence to the present scenario. But in the last 3 decades, I can say that was the time when really Indian tourism developed. India में सबसे पहले जो tourism policy आया था, that was in 1982. That was the first time when the Indian tourism policy was submitted in the parliament, and the government of India decided to have an Indian टूरिज्म पॉलिसी. तो 1982 में जब इंडियन टूरिज्म पॉलिसी आया था उस समय इसको एज ए डिक्लेयर किया गया एज ए टूरिज्म इंडस्ट्री. और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो था वो न ही यूनियन लिस्ट में था, न ही स्टेट लिस्ट में था, न ही करंट लिस्ट में. बाद में इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया. और उसके बाद ये जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग एंड गोइंग टू द लोकल लेवल टू द स्टेट लेवल. और 1986 में नेशनल कमिटी ऑन टूरिज्म का स्थापना हुआ. उस 5-year प्लान में टूरिज्म को काफी प्रमोट किया गया और रेगुलर टूरिज्म के अलावा इंडिया में जो है डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर काफी फोकस किया गया. और मेरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आप सभी लोग जानते होंगे कि the organization gives a LTC, leave travel concessions, to travel with their families in a 1 calendar year so that they can visit to a destination. The purpose is to promote the domestic tourism. और उन्होंने डोमेस्टिक टूरिज्म के अलावा they also developed wildlife tourism. The national park, the bird sanctuaries and all the things. उसके बाद इन्होंने जो है काफी स्पोर्ट्स, हमारे इंडिया में एशियाड हुआ, फिर उसके बाद ट्रैकिंग. So this is how gradually from the regular tourism the government of India focus on the other new sector of the tourism.
इसके बीच में टूरिज्म जो पॉलिसी था वो बहुत अधिक डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन कुछ स्टेट जो है वो टूरिज्म में काफी आगे निकले, जिसमें आपके हैं केरल है, फिर आपके जो है गोवा है, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है. These are the states they did much better than the national tourism policy or the national tourism concept. लेकिन आज के डेट में भी अगर आप स्टेट टूरिज्म देखें तो मोस्टली दे आर द प्राइवेट सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है बहुत अधिक दे यूज्ड टू मेक द पॉलिसी, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर्स. दे आर द वन हु मेक द पॉलिसीज एंड प्रोमोट. जब टूरिज्म सबसे मेन, तो आज हम बता रहे हैं कि हम पिछले 3 दशकों में जो टूरिज्म के डेवलपमेंट देखते हैं, दैट वाज द फर्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी विद ए स्लोगन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. और उसके बाद हमारे इंडिया में टूरिज्म की बूम. और आज भी हम जो टूरिज्म देखते हैं इंडिया में, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल टूरिज्म हो, इट इज जस्ट फॉर द इनक्रेडिबल इंडिया. एंड उसके पहले भी पॉलिसी बना था, लेकिन 2002 पॉलिसी इज ए लैंडमार्क. और इफ यू कैन से दैट वाज द टाइम व्हेन दे रियली इन इंडिया द टूरिज्म बूम. और 2002 में जब हमारे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी बना, तो हमारे गवर्नमेंट जब इस पॉलिसी को पार्लियामेंट में when they put the policy in the parliament, the government realized that to promote the tourism, to promote the economic of the country, we need to promote the tourism. And we have seen the neighboring countries like Singapore, Thailand, Malaysians, they were developing in their tourism, and the tourism was starting to bring the economy of the country. Then the government realized, and this policy has really changed the complete scenario of tourism in India. और जब हमारे 2002 में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जब लाया गया, तो उनके 7 बेसिक प्रिंसिपल्स थे. There were 7 basic principles of the national tourism policy of 2002. The first was swagat, so welcome. The main concept was कि welcome a guest and send them back as a friend. That was the main concept. आप किसी को, हम उस समय टूरिज्म को ये कहा गया कि कोई विजिटर्स आपके कंट्री में आए या आपके जगह पे आए, they are if they are going to any destination, welcome them as a guest and send them back as a friend. When they go back to a friend, obviously it's a mouth to mouth publicity which is work. लोग गए अपने कंट्री में और कहेगा, oh, India is a great country. The hospitality is marvelous. People are very friendly. The food are very good. तो सबसे पहला ये कंसेप्ट है कि आप उनका स्वागत कीजिए, वेलकम. That was the first principle. The second was सूचना, information. Give the information to tourists when they come to India. Or during that period, the Minister of Tourism, Government of India, opened a counter at the airport, at the railway station, and the bus stations as the information center for the tourists. It was not only for the international tourists, but also for the domestic tourists. So information is also very important. क्योंकि जब कोई टूरिस्ट आता है, अगर आप भी किसी शहर पे अगर जाए और यदि वो ऑर्गेनाइज्ड टूर नहीं है, तो सबसे पहले आपको तो इंफॉर्मेशन चाहिए. नाउ द गूगल मैप हैज मेड इट वेरी इजी. आप गूगल करके देख लेंगे कि कौन से होटल्स है, द रूम्स आर अवेलेबल और नॉट. आपके जो रेडियो टैक्सीज हो गए, यू कॉल द टैक्सीज, द ओलाज एंड उबर एंड यू गो टू द डेस्टिनेशन. लेकिन उस समय में ये फैसिलिटीज उस समय नहीं था. तो ऑब्वियसली व्हेन द टूरिस्ट गो टू एनी डेस्टिनेशन, इफ इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन. लोगों में लैंग्वेज बैरियर था. People were not able to speak the language which the Western visitors used to come. So information was also the key element to promote tourism during that period. The first was swagat.
Second is सूचना, and the third is सुविधा. To facilitate, उनको प्रॉपर सुविधा दिया गया. आप अगर रेलवे स्टेशन में देखिएगा तो एक फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग से काउंटर बनाया गया ताकि उनको भीड़ में वेट न करना पड़े. दे कैन कम वेरी कंफर्टेबल. और उनको सुविधा मतलब कि नॉट ओनली इन दैट इंफॉर्मेशन सेंटर बट ऑल्सो टू द अदर प्लेसेस एज वेल. तो होम स्टे, आज हमारे टूरिज्म में बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि होम स्टे. दैट वाज द टाइम व्हेन द होम स्टे, मेनी पीपल दे ओपन देयर हाउस फॉर द विजिटर्स टू कम एंड स्टे. और उस समय ये कहा गया था कि जो होम स्टे होता था वो जो है ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि जब वो होटल्स में रहते थे तो दे स्टे इन द रूम, दे सी ऑल द लग्जरियस थिंग. जब वो किसी होम स्टे में जाते थे तो दे नॉट ओनली स्टे देयर बट दे आल्सो इंटरैक्ट विद द फैमिली, दे गो एंड स्टे ओवर देयर. So these are the facilitations or the facilities which have been provided for the tourism as per the 2002 policies. The fourth was Suraksha. Safety was also very important. If we don't provide the safety, obviously it goes the bad message to the international arena that India is not safe to travel. And safety was also the priority for the government to promote tourism in India. Then the other was Sahyog, is a cooperation. Cooperation of whom? Cooperation of the people, those who are welcoming them, and cooperation of the travelers as well. क्योंकि इंडिया के बारे में लोगों के आज के डेट में भी इंडिया इज ए वेरी पुअर कंट्री. यू विल वेरी सरप्राइज. हम एक बार अपने ट्रैवलर के साथ हम they were couple, they were from Australia, और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे. देन वी वेंट टू द यूनिवर्सिटी एज ए पार्ट ऑफ द टूर, उनको दिखाने के लिए. जब भी B.H.U में वेस्टर्न टूरिस्ट आते हैं तो उनको दिखाने के लिए कि एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब बिल्डिंग्स है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द टूर. और उसके भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर भी है. वो एक मंदिर है जहाँ पे वेस्टर्नर्स को भीतर जाने के लिए अलाउ करते हैं. आजकल शायद उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर रखा. तो जब हम अपने टूरिस्ट के साथ जा रहे थे, व्हेन वी एंटर्ड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, मेन गेट के भीतर जैसे हम एंटर किए तो हमसे पूछा वेयर वी आर. हमने कहा वी आर इन वाराणसी एंड वी आर विजिटिंग द यूनिवर्सिटी. हमने पहले ही बताया कि मालवीय जी का स्टैचू था, इज द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी, अर्ली 1916 ब्ला ब्ला. तो उसने कहा कि आर यू सीरियस? हम कहा क्यों, क्या हो गया? तो वो कहा कि हम लोग बनास शहर में. हम कहा यस. उसने कहा नहीं, हम बनास में आने से पहले हमने सुना है कि इन वाराणसी लेडीज यूज्ड टू पुट ऑन ए ग्रास स्कर्ट, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में अभी नहीं होता था, पहले लोग पहनते. हमने कहा कि व्हाई वी हैव सच काइंड ऑफ इंप्रेशन. तो दे सेड मी दैट बिफोर कमिंग टू इंडिया वी हैड देन information that it's a country like Varanasi, the oldest living city in the world, where you will see the bullock cars flying on the roads. People don't put on a western outfit. तो हमको थोड़ा ताज्जुब लगा. हमें कहा कि do you know we are in the 21st century? Even if you go to the African countries, you don't find anything like that. तो इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ये जो है हमारे जो पॉपुलेशन इज नॉट फ्रॉम वन साइड, इज फ्रॉम द अदर. पीपल यूज्ड टू से ओह इंडियंस, दे आर दिस, दे आर वेरी डर्टी. लेकिन ये जो पॉलिसी वाले लोगों को जब एजुकेशन हुआ, थे पीपल नाउ कमिंग टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग द पीपल एंड ऑल दिस. तो जब हम उनको पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द कंट्री ऑल्सो. आज भी हमारे लोगों में कॉमन कंसेप्ट है, जब भी वो किसी वेस्टर्नर्स को देखते हैं, दे ऑल थिंक दे आर द ब्रिटिश. वो शब्द नहीं करते अंग्रेज हैं. They can't differentiate between American, Spanish, Italian, German and all. They all are British, but it's not true. और कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अरे ब्रिटिश है, they rule over the country, they torture us, blah blah blah, all the things, and they have that very prejudice in their mind. तो इसके कारण क्या है कि जब कॉपरेशन हो, ऑब्वियसली पीपल बिफोर कमिंग टू इंडिया दे गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन. दे उस समय इंडिया के अच्छा मार्केटिंग हुआ, लोग कंट्री के बारे में जानना शुरू किए. तो इट इज अ कॉपरेशन फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम द होस्ट एज वेल एज द गेस्ट हु विजिटेड द कंट्री.
Therefore, cooperation was one of the things. The other was Samrachana, that was the infrastructure development. No doubt, during that period, the national highways keep on coming, the tourist destinations keeps on promoting, hotels keeps on coming. People started open the door of the house to welcome the people, and the tourist inflows keeps on coming, and the tourists from different part of the world. And it is not only the international tourism, even the domestic tourism. जैसे हमने बताया the people used to go as a pilgrimage. And the last was safai, that was cleanliness. Cleanliness is a very important for that, because if you don't clean, people get the impression. Couple of days I got a video, I don't know who is this man who created this video. आजकल YouTube में बहुत सारे he is the one, he is someone in the Western country. और उसने पूरे इंडिया के ऊपर वीडियो बनाया, और जितनी गंदगी है सब कुछ ने वीडियो बना के उसने भेजा. Oh, India is such a dirty country, blah 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 blah. I don't know where he made this videos and all. और उसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, जो भी कुछ था. तो इससे जो है we try to educate to the people. It is true. Unfortunately, in India, many monuments, अगर आप चले जाइए, go to many monuments, still you see the graffitis, people store all the trashes and everything. We have to educate. But if you see at present, some of the monuments such as, if you go to the Taj Mahal, इतनी सफाई और इतनी क्लीन आप 25-30 साल पहले था, लेकिन उतना नहीं था. आज आप देखिए एकदम नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन. तो important was also to make it as a clean. Safai was also very important. So therefore, these are the seven key elements in 2002 government policy to promote tourism. The first one, as I said, is a swagat, welcome. Second is suchana, that is information. Third is suvidha, that is facilitation. The other was suraksha, that is safety. Then it is a sahyog, that's a cooperation between both the host and the guest. Then is a samrachana, that is the infrastructure development. And the last was safai, that is the cleanliness. उसके बाद government of India started putting an advertisement in the radios, TVs, also on this media. So that is how gradually the tourism keep on developing. और उस समय गवर्नमेंट, जैसे हमारे कल्चर है अतिथि देवो भव, तो वो जो है कंसेप्ट है, जो अतिथि देवो भगवान है, that was also worked a lot. And in 2002 policy, the government also reinforced that very concept. So today when we talk about the tourism, it all goes in 2002 national policy. उसके कुछ मेन पॉइंट्स है which I will discuss so that you can know how these things are developed. The first was to give an eco-tourism importance for the tourism industry. उसके बाद रूरल टूरिज्म था, इको टूरिज्म था, और इसमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज्म के साथ एडवेंचरस टूरिज्म उस समय इंडिया में जोड़ा. That was the time when the trekking, the paragliding, and all the things they keep on starting, and it also helped with the. जैसे हमने बताया कि Incredible India, that was the slogan given by the Minister of Tourism, Government of India. और इस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए उस समय हमारे इंडिया में केरला एज ए स्टेट वाज डूइंग वेरी गुड इन. So the government of India followed the policies and the strategy followed by the Kerala tourism, Kerala state tourism, for marketing to for cooperation with the vendors and all the things. So the concept to Kerala जो policies है वो national level पे जब applicable हुआ तो then it gives very good result. During that period, in 2007 and 8, that was the first time India was unanimously elected as a executive council of the United Nations World Organization. इसके कारण जो हमारे टूरिज्म के लिए एक पोस्ट that was in the year 2007 and 8. एक साल के लिए इंडिया जो है become a member of the WTO.
NWT National World Tourism Organization. और 2008 और 9 में वो जो अतिथि देवो भव जो हमारा जो कॉन्सेप्ट कोर्स किया ग्रेजुअली हाउ दे बिकम डेवलप और 2009 एंड 10 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस का नाम बदल के ऐसे इंडिया टूरिज्म with a logo. So that is how we can identify about the country and the tourist destination. और उस समय आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर टैक्स वो दिया गया था हॉलीडे दिया गया था टू द होटेलियर्स टू ओपन एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मेनी न्यू चेन ऑफ होटल्स और हमारे वर्ल्ड जो चेन ऑफ होटल्स स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया लाइक रेडिसन Marriott, Hyatt, these are the international hotels chains. They started coming to India and they are operating all over the country. 2010 or 11 May, that's a time when the government started promoting India as a tourist destination. और उस समय दिल्ली को it has been developed as an international and domestic tourism. And 2010 is the landmark because that's the time when Delhi hosted the Commonwealth Games. तो जैसे हमने बताया कि जब भी कोई कंट्री कोई इंटरनेशनल गेम जब होस्ट करते हैं तो ये नॉट ओनली होस्ट द स्पोर्ट्स इवेंट बट दे आल्सो प्रमोट द टूरिज्म. उसके बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड I don't know many of you have watched it. Amir Khan was assigned to promote the tourism. और उनके वीडियो क्लिप्स आते थे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए. That was the time when he was assigned to promote the tourism. Gradually, how it keeps on developing. For 2011 and 12, the government of India started a tourism circuit. आज हमारे इंडिया में टूरिज्म सर्किट में ऐसे तो साउथ में आजकल बहुत अच्छा टूरिज्म है जैसे इंडिया नॉर्थ में गोल्डन ट्रायंगल है ऐसे साउथ में भी गोल्डन ट्रायंगल. आजकल टूरिस्ट जो है ये वी गेट लॉस ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट. उस समय एक कंसेप्ट आया टूरिस्ट सर्किट डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए पिलग्रिमेज सर्किट. पैलेस ऑन व्हील जो कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड गोज ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड अप. Now, आज भी एक महाराजा पैलेस. It is a train where the people travel on a train, or those are the luxurious train. The people get an experience to travel by train, and they go to destination to one destination to another. ये जो travel luxurious hotels होते हैं, वो क्या करते हैं? रात को they travel, and in the train, they have all these with the proper restaurant. They have a library. They have a kitchen, obviously they have a bar, they have a bedrooms, all modern facilities. So during the night time they used to travel. और डे टाइम में वो क्या करते हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं. The buses are already there. The travelers they go to the bus and then they drive to the nearby big hotels. Like in Varanasi, the Maharaja train which comes to Varanasi, early morning it arrives in Varanasi. Then the people are taken to the Taj hotels where they can have a breakfast, and after breakfast they take them for the tour. And after the tour, they again come back to the hotel Taj where they have a lunch, and then they go back to the train and they go to the next destination. So while doing so, the people don't spoil the daytime because for the daytime they are on the tour, and after the night time they are traveling from one destination to another. So the concept tourist circuit for national and international tourists was also developed. जैसे कि डोमेस्टिक में हमारे पिलग्रिम्स टूरिस्ट है, फिर अलग रिलीजन्स के ऊपर हिंदू सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है. So this is how the concept of tourism as a circuit was developed. During that period, also emphasizes for the hygiene. Hygiene was very important for the tourists because that's the time when the government initiated to clean all the monuments
and they maintain all the monuments, and that is how it keeps on developing. 2012 and 13, that was the time when the government realized that tourism को हम लोग 365 दिन के लिए promote करेंगे. It should not be very seasonal. क्योंकि इंडिया में if you see the month of May and June, it is so hot. Even international tourists अब छोड़ दीजिए, domestic tourism के लिए भी travel करना. There is a reason that during the summer all people go to the mountains. So that was the time when the government decided to promote tourists India as a tourist destination for 365 days. साल भर उनको बोला, और कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट थे और डेस्टिनेशन थे जिसमें कि क्लाइंट रिपीटेड क्लाइंट. आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं जो रिपीट, जो कि पिछले 18 हम एक ट्रैवलर को जानते हैं, he is coming to India for the last 22 years. वो हर एक बार वो किसी न किसी टूर कंपनी से टूर लेता है और इंडिया में ट्रैवल करता है. He is from the United States. तो उसने कहा कि एक्चुअली there is no one in his family, और उसको इंडिया सबसे अच्छा लगता है. यहाँ के फूड लोग और उसके बाद जो कल्चर है, और सबसे बड़ा चीज है कि वो यूएस में जहाँ रहता है ड्यूरिंग दैट विंटर टाइम इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, जैसे हेवी स्नोफॉल. तो हेवी स्नोफॉल होने के कारण जो है वहाँ पे लाइफ बिकम्स सो हेल, therefore he come to India for almost a month and he travel and then after he go back. तो हमारे बहुत से रिपीटेड क्लाइंट भी होना शुरू हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो गवर्नमेंट जो है टूरिस्ट के लिए इंडिया को सीजनल रख के थ्रू आउट ईयर बनाना शुरू. ड्यूरिंग दैट पीरियड एक नया टूरिज्म इंडिया में डेवलप हुआ, दैट वाज गोल्फ टूरिज्म. All these golf courses keep on coming, and many people they came to India just to play golf, which is much cheaper because उसकी जो membership है, golf club की membership is very expensive. So those who are the good golf players, they used to come to India and they spend their holidays. During that period हमारा medical tourism भी काफी develop हुआ. Wellness tourism जो कि केरल पे is the main center is in Kerala. This is how the 2012 and 13 the tourism, these are the tourism was added. And the most interesting thing is in 2013, the government brought a new concept of film tourism. The government invited all the film producers all over the world to come to India and make a films and documentary. और हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और मिनिस्टर ऑफ कल्चर के साथ जो है हमारे एक साइन अप हुआ, एंड देन वी हैड लॉट्स ऑफ उस समय मूवीज में दिखेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड मेनी ऑफ द लोकेशंस आर फ्रॉम राजस्थान एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. उसके बाद ये इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो सबसे अधिक टूरिज्म उस समय शिफ्ट हो गया था फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ऑस्ट्रेलिया. और जानते जब ये फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो इसका मतलब ये कि नहीं कि दिस से इकोनॉमिक हेल्प टू कंट्रीज बट आल्सो प्रमोट द डेस्टिनेशन. So this is how the tourism policy 2002, which was started, and gradually keeps on going. The different policies like the government in a different period of time, and that is how the tourism emerged as a new trend in the tourism. उसके बाद the government and the private tour operators started a very new concept to develop tourism in the country. Is a poll tourism. They used to during the election. आज के तो हमारी ईवीएम में होता है, तो पहले हमारे बैलेट पेपर में होता था. और वेस्टर्न कंट्री ये सोचते थे कि इंडिया इज सच ए बिग कंट्री, हाउ द इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज सच ए election in a very proper way where the people go and they cast their vote. So that was the time, though it was a very short period of time. हमारे एक नया concept आया था during the elections, the Lok Sabha elections. Many tourists, particularly the medias and the other tourists, they used to come to India and they used to visit to different places to see how people they cast their vote. अगर आप प्रेजेंट स्टेट में देखिएगा तो प्रेजेंट स्टेट में टूरिज्म हैज चेंज अ लॉट. उसका कारण है
due to the development of technology. आज के डेट में आपको जरूरी नहीं कि you have to take an organized tour. Organized tour जो होता है they are very expensive because everything is prepaid and everything is organized. But many people, those who are in a low budget, they are not rich people. Therefore, they want to visit to the destination where they don't have to spend a more. Therefore, ये जो टेक्नोलॉजी आया जिसके कारण क्या है कि आज बहुत सारे एप्स है, मोबाइल एप्स है, थ्रू विच यू कैन बुक योर होटल्स ऑनलाइन, यू कैन बुक योर ट्रांसपोर्टेशंस. और ये अगर गूगल मैप में यदि आप अपने लोकेशन को ओवरलैप करेंगे तो you can find your own data. So put your own data, you overlap your destination in the Google map and you get the information what you are looking for. आज के डेट में आप जो है ओयोज होटल्स आए, बहुत सारी चीजें आए. Therefore, in the recent time, the tourism industry has become more advanced. Post-COVID period, it has going to change something different. Post-COVID में the government is emphasizing on hygiene, safety, social distancing, and minimum interaction of the people for the payments. तो याद है pre-COVID period में जब भी hotels के साथ early morning most of the people used to check out, they used to go from one city to another. और after breakfast में अगर आप देखेंगे जो रिसेप्शन जो डेस्क है उसमें लंबी लाइन होती है, लोग पीपल यूज्ड टू सेटल देयर थिंग्स, एवरीवन हैज टू ब्रिंग द कार्ड्स एंड ऑल दिस. पोस्ट पैंडेमिक इज गोइंग टू चेंज. यू डोंट हैव टू वेट ऑन ए लाइन. आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, सर दिस इज द वन यू कैन पे ऑनलाइन, पुट योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड दैट्स इट हैज बीन पेड. सबसे अधिक पोस्ट कोविड पीरियड में देखा गया है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट में सबसे अधिक कैंसिलेशन जो है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री में फेस किया ऐसा कैंसिलेशन. डोमेस्टिक टूरिज्म में उतना अधिक कैंसिलेशन नहीं हुआ, पहली चीज. दूसरी चीज है कि पोस्ट कोविड पीरियड में, पोस्ट पैंडेमिक में द गवर्नमेंट और द टूरिज्म इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू एम्फसाइज मोर इन ए स्मॉल ग्रुप रेदर देन इन लार्ज, मोस्टली द कपल्स. क्योंकि जब छोटे होंगे लोग होंगे 3 या 4 जो फैमिली ग्रुप ट्रैवलर्स होंगे, ऑब्वियसली देयर इज नो चांस टू ट्रैवल, बट व्हेन यू हैव अ ग्रुप देयरफॉर देयर इज लेस चांस. Government is still focusing on the group and international tourism during that period. Post pandemic, it is also the government or the Ministry of Tourism focusing more on the domestic tourism. Interest tourism को almost finished. 2 साल से नहीं. अभी कल की न्यूज ये है कि 27th of March the government is going to open the airlines to come to operate to India. Let's see if the things goes well, it will operate. Otherwise, because the government keep on changing the deadlines because just for the COVID. Therefore, the post-COVID period is going to be change in the tourism. इस पोस्ट पैंडेमिक में एक नया कंसेप्ट आया जो कि रिसेंटली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स डोमेस्टिक टूरिज्म में देखा गया, वो है वीकेंड हॉलीडेज. People don't want to travel. I'm talking about the domestic tourism. People don't want to travel for 10 days or 15 days. जो बड़े शहर जैसे बैंगलोर में हुआ, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, तो पीपल जो लिव इन बिग सिटी वो अपने वीकेंड को सैटरडे एंड संडे और एक्सटेंडेड वीकेंड चले जाते हैं. They go to the nearby places. They want to travel between 300 to 400 kilometers of its radius of the surround of the area where they live. It is 3 to 2 or 3 days. So weekend holiday is a new trend in the post-COVID period. और एक रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है कि सोलो टूरिज्म. पीपल वांट टू ट्रैवल अलोन. तो ये जो एक क्योंकि पीपल व्हेन दे आर वर्किंग इन आईटी सेक्टर्स एंड अदर सेक्टर्स, ऑब्वियसली देयर लाइफ बिकम लिटिल बिट ऑफ मोनोटोनस. और जब वो सोलो ट्रैवलर्स होता है, जब अकेले वो ट्रैवल करता है और या करती है, व्हेन दे ट्रैवल दे मीट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड दे एक्सप्लोर द न्यू डेस्टिनेशन. अभी आज के डेट में अगर आप जाइए तो लेह लद्दाख वाला जो सेक्टर है सोलो ट्रैवलर के लिए इट इज बूमिंग.
The solo travelers is also, it started already in the pre-pandemic period, but it is going to be more in the post-pandemic period. The solo travelers. Budget hotels are, the budget tourism is also going to be more important in the post-pandemic. The other tourisms जो हमारे at present में है, the travel blog writing. क्योंकि जैसे हम बता रहे थे, कुछ लोग जो है, they are very good travelers, they want to travel, but they don't have a money to travel. Therefore, what they do, mostly they are the photographers and the writers. They write on the blogs about the different destinations, and they put on the social media on a different platform. और जब उस प्लेटफॉर्म में उनके ब्लॉग फेमस होते हैं तो ऑब्वियसली दे गेट स्पॉन्सर्ड आउट ऑफ इट, एंड व्हेन दे गेट स्पॉन्सर्ड आउट ऑफ इट, दैट्स अ मनी दे यूज फॉर ट्रैवल. देयरफॉर एक नया कंसेप्ट आया है, वो है ट्रैवल ब्लॉगिंग. इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन सम ऑफ द सिटीज. लाइक अगर आप ट्रैवल ब्लॉग में देखिएगा तो मोस्टली दे आर फ्रॉम द आईटी बेस्ड इंडस्ट्री. और एक क्लब बना है that is called Wow Club. These are the club which is mostly for the solo travelers. उनकी club है. You become a member of the club if you are a solo traveler. You want to travel in any destination of your own, and if you member of the club, then they will tell you कि अगर आप इस destination पे अगर जाना चाहते हैं तो these are the other people who are also traveling as a solo traveler. So you can communicate, you can make a friend from them, and then you can travel, and it will give a very good experience to go to the such destination, the off-beat destinations and the solo travels. इसी जिस तरह से हमारे इंडिया में जो टूरिज्म का ट्रेंड चेंज हुआ है, इंटरनेशनल टूरिज्म में भी एक नया चेंजेस टूरिज्म इंडस्ट्री में देखा गया है. सबसे इंटरेस्टिंग जो टूरिज्म इंडस्ट्री इंटरनेशनल टूरिज्म में देखा गया है वो है पोलर टूरिज्म. Anybody know what is a polar tourism? POLAR, polar tourism. कोई जानता है पोलर टूरिज्म क्या है? Anybody? आजकल people they are traveling to the poles, North Pole and the South Pole, the Antarctic or the Arctic. आजकल लोग जो है एंटार्क्टिक में ट्रैवल करते हैं. ड्यूरिंग द टाइम लाइक व्हेन इट्स द विंटर, व्हेन द सन्स आर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द पीपल गो टू द एंटार्क्टिक where it is an expensive but it's a very different experience. And when they go to the Antarctic, they see the glaciers, different wildlife in a natural habitats. It is also becoming very attraction for the people to go to some of the destinations like Antarctica and Arctic. When the sun is on the southern sphere, they go to the Antarctic, and when the sun is on the northern sphere, they go to the Arctic because just for the heat. Otherwise, you can't go during in the Antarctic during the time when the sun is on the northern hemisphere. एक दूसरा टूरिज्म बहुत अच्छा है, ये है स्पेस टूरिज्म. Started, but it is not so popular. Space, when they go to the space, they go to the orbit and sub-orbit by a rocket, and they will go to that place and see. They go beyond the planet. Though it is very expensive, very few people go, but who knows? In the near future, the space tourism is going to develop. एक अदर टूरिज्म जो कि आजकल इंटरनेशनल एरिया में देखा गया है, दैट इज कॉल्ड डार्क टूरिज्म. जैसे हमने बताया, डार्क टूरिज्म मतलब क्या है? किसी भी कंट्री में यदि कोई इंसिडेंट होता है, नेचुरल क्लैमिटीज या कोई वॉर इस तरह के, तो वहां पे टूरिज्म खत्म हो जाता है. जैसे हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल टूरिज्म में देखे थे कि हमारे जब रोमन एम्पायर जब खत्म हो गया, दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज कॉल्ड एज अ डार्क टूरिज्म. पीपल डोंट यूज्ड टू ट्रैवल.
अभी इंटरनेशनल एरिया में दिखा गया कि डार्क टूरिज्म मतलब क्या है, टूरिस्ट उन डेस्टिनेशनों में जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई इवेंट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए तो जैसे कि अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन में कार्निवल एट द टाइम इट्स अ प्ले वेयर द न्यूक्लियर रिएक्टर happened at the year later जब वो लीकेज हुआ in the water, the radio activities keeps on going, and that was the time lost most of the people, they lost their lives. So some people used to go to the Russia to Ukraine to visit to the Carnival area to see how it has affected. In the United States, people used to go to the what they call it as a ground zero. Ground zero is the place where the Twin Tower came down in 9/11. People want to go and visit to that very spot to get an experience. तो एक डार्क टूरिज्म जो है वो इधर रिसेंटली इंटरनेशनल टूरिज्म में काफी बढ़ा। एंड द लास्ट वन व्हिच वी हैव सीन वॉलंटियर टूरिज्म। वॉलंटियर टूरिज्म पहले से बहुत अधिक था, लेकिन इधर बहुत अधिक है। क्रिश्चियनिटी में उनकी जो मिशनरीज होते हैं, they used to take their people from one country to another as a part of the missionaries. Like अगर आप कैलकाटा में देख लीजिए, मदर टेरेसा होम में जो है फॉरेनर्स आते हैं to give the service to the orphanage, to the old people. और जब वो आते हैं, जब वो अपने सर्विस देते हैं, ऑब्वियसली उसमें से कुछ समय निकाल के देश को ट्रैवल। इसी तरह बहाइस जो लोटस टेम्पल हमारे दिल्ली में है, इट इज लोटस टेम्पल इज बिल्ट बाय द बहाइस। तो बहाइस के जो मेंबर्स होते हैं, यू हैव टू बी अ मेंबर्स एंड यू हैव टू फॉलो द बहाइस। तो बहाइस में क्या है, उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं, दे सेंड देयर वॉलंटियर्स टू डिफरेंट कंट्री वेयर दे हैव अ बहाइस टेम्पल। अगर आप दिल्ली में लोटस टेम्पल में चले जाइए, अगर आप बहाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो दे हैव ए ऑडिटोरियम, और वहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में जानना चाहते हैं आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि जो वॉलंटियर्स आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, और वो ऑडिटोरियम में ले जाएंगे एंड दे विल एक्सप्लेन अबाउट द बहाइस एंड दे विल आल्सो एक्सप्लेन यू व्हाई द लोटस टेम्पल वाज बिल्ट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। Baha'is, they don't worship any god and goddesses. They have a house of meditation. अगर आप में से कोई अगर लोटस टेम्पल में गया होगा तो उसमें आप देखेंगे कोई भी देवी देवता कुछ नहीं है, एक प्रेयर हॉल है जहाँ पे लोग जाते हैं और बैठ के वो मेडिटेट करते हैं। तो these are the volunteers. They travel to different destinations, and when they go, they work as a volunteers, but they take the time off and they visit to the different places, important places of the country that they visit. So this is the international new thrust of the area where the tourism industry in the international area is going, and in India also there are many new segments are coming up where the people want to, as I say, the solo travelers, the offbeat travel destinations, and the other things which are coming up. So that was the one which I covered it about the present state of Indian tourism emerging trend. Anybody want to know anything? You have any questions? I would like to share it. कोई किसी के पास कोई questions है? Anybody has any question? Sir, is space tourism popular in India? Which tourism? Space tourism. No, it is not. Mostly the space tourism is in US because it is very expensive. और हमारे यहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है which you can't go. Mostly people from the United States. There are few of them who are going for it. But as I say, it is a very initial stage. But suppose in the near future, it will promote and lots of people will go to this space. Say. Sir, waiting to the Mount Everest is which kind of tourism? Whether it is polar tourism or
No, it is not a polar tourism. It is an adventurous tourism. Polar tourism when they go to the North Pole or South Pole. So it is an adventurous tourism, or those who are just love tracking or part of the adventurous tourism, they go to the North Poles. So that is not a polar tourism. Polar tourism is only when they go to the poles, North Pole or South Pole. Nowadays, there are lots of tourists from European countries and from the United States. They go to Antarctica. And it's very adventurous. They see the wildlife in a natural habitats. They put on a tent over there. If there is water, they go a little bit of boat riding, and they cook their own food. There are big groups, and it is organized. It is becoming more popular. Look at their likes about Korea. Let's go and see something different. Where you can see the natural views, some of the glaciers, which are thousands and thousands of years old, and they walk over there. I got a friend, she's from the United States, and she takes those travelers to the Antarctica every year. And she said it's very different. It's a different experience to over there. Though it's a freezing point because you are on the glacier, but it's those who are adventurous, they love that. Any other questions you'd like to know? You know, when you are in these professional courses like this one which you have to very practical. You have to read more. More you read, more you have the ideas, and more you have the ideas. Obviously, more like in travel industry, more you will explore. ऐसे हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है which we need to develop it. Obviously, जब आप कोई सेक्टर आएगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कनेक्टिविटी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होता है. We have lots of potential in this country, and we hope that in the post-pandemic, the government is going to focus on the tourism because pandemic सबसे badly affected is the hospitality and the tourism industry. The tourism industry is such a sensitive industry कि हमारे यहाँ तो टूरिज्म इंडस्ट्री अब तो 27 मार्च से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ओपन दी एयरपोर्ट्स और द इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू कम. उसके बाद क्या है कि अब जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है, इट ऑल्सो अफेक्ट द टूरिज्म क्योंकि लोग बड़ी कंसर्न होते हैं ना, अरे यार कहीं पे गए और अगर एयर स्पेस अगर बंद कर दिया गया और कंट्री में बिकॉज NATO you know the European international things happening. अगर NATO countries अगर उसमें they involve it, obviously some others space area will be closed, or how they will travel. तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो फर्स्ट इंडस्ट्री badly affect is the travel and tourism industry. It's a very sensitive industry. No doubt, this is the industry where the government spend a lot of money out of it. But those are sensitive and very. तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री विल go up and the government is gradually the government is trying to open. But अगर ये war अगर थोड़ा सा और लंबा चला गया तो who will travel? That will affect it. But let's hope if things comes normal because everyone want peace and already जो those travelers 2 साल वो घर में बिताने के बाद आप तो पागल हो गए कब खुलेगा और हम लोग भागेंगे. So people are traveling in Latin American countries. Lots of people are going. Some of them are going to Europe, but after this war, people are cancelling to Europe. Asia अभी भी touch नहीं हुआ Western tourist के लिए. अगर things becomes normal, so obviously in the near future, Asia is going to go, particularly in India. There are lots of potential in India. Any other person like to know? Anyway, I will sign it off today, and tomorrow we'll have a class and we'll discuss about the concept and function of management. This is the topic which is mostly a theoretical concept. I will give you some example how the managers in the organization work. The concept and function of management, nature and significance of management, managerial roles, responsibilities, process, and organization. That will discuss for tomorrow. Okay. Thank you to all of you and bye-bye and have a wonderful day. Bye.
Thank you, sir. Thanks.